Hello, my dear students. Very good afternoon to everybody. And first of all, I welcome you all into my YouTube channel and Talukdar Maths. So, last few classes I have discussed about the properties of definite integral, and continue with this properties of definite integral. I am going to discuss a new property today and also solve the problem. Okay. So, the property is, you see, what is the property? Integration 0 to twice a fx dx is equal to what? Integration 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of twice a minus x. You can write this integral into two separate integral. One is integration 0 to a fx dx, another is integration 0 to a f of twice a minus x dx. So, if you prove it, then you can convince yourself. Okay. So, let us take this particular integral as what I. We know between 0 to twice a, we can write 0 less than a, less than what? Twice a. Can I write this? We can write easily. Understood? So, one integral can be written as what? 0 to a, another integral can be written as what? A to what? Twice a. By using the property, that is integration, if a less than c less than b, then original integration a to b fx dx can be written as integration a to c fx dx plus integration c to b fx dx. This property I am going to apply here. So, since between 0 and twice a there is a number a, so this integral is divided into sum of two integrals. One integral is 0 to a fx dx, another integral is a to twice a fx dx. Clear everybody? Now, in this integral, you see, you need to convert this integral. One integral is 0 to a fx dx, ye to this one and that one are same. So, our sole objective is to change this integral into this term, change this integral in this two term. That means this x is replaced by what? Twice a minus x. This x should be replaced by twice a minus x, and this lower limit becomes 0 and upper limit become what? A, and then you can reach this particular integral. Okay. We name this particular integral as suppose I1. This is what? I1, and finally your integral I becomes what? This integral plus I1. So, our main job is to reduce the integral I1, this I1 into this. So, here x is replaced by what? Twice a minus x. Since x is replaced by twice a minus x, so we will do one thing, substitution method use करेंगे. Substitution में क्या कर रहा है, क्या करेंगे हम? X is equal to, we suppose that x is equal to what? Twice a minus t. Suppose that, such that our aim should be, it should be twice a minus this type आ जाए, ठीक है. So, x is equal to twice a minus t, and if you differentiate, it will be dx is equal to what? Minus dt, and accordingly when you use the substitution method, so limit should be changed. When x is equal to a, if you put x is equal to a, you will get t equal to what? A also. You calculate, you can get, and when x is equal to what? Twice a cancel, t becomes what? 0. So, ultimately limit change to what? T. Then what will be particular integral? This integral becomes what? Now, ये lower limit क्या होगा? This lower limit will be that is when x is equal to a, then lower limit is what? Same, it is remain as a, and when x is equal to twice a, then from here t equal to what? 0, and your integral becomes what? F of x is replaced by what? Twice a minus t, and dx is replaced by what? Minus dt. Yes or no? So, finally your integral I becomes what? A to 0 f of twice a minus t into minus dt. Okay. If this, suppose our job is to what? That integral limit should be 0 to a. So, to get the limit 0 to a, what we will do? We will interchange the limit. Okay. If you interchange the limit, what we will get? You will get, so I1 is equal to, when you interchange the limit, one property is there. After interchange the limit, what happen? Another minus sign will come, and this minus and that minus will become plus, and finally your integral becomes what? 0 to a, and this one is f of
ट्वाइस ए माइनस टी इंटू वाट डी टी, दो माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगी. ओके, नाउ you know a property, if integral is in terms of t, first property, from the first property we can say that it will be twice a minus x dx. So t can be replaced by what, x, or this t can be replaced by x, this dt can be replaced by what, that is dx. What is the property? Property is integration a to b ft dt can be written as integration a to b fx dx. You can mention this property also. So the function related to t can be converted into what, related to what, x, by using the property. Clear? So if you replace this value in the relation number what, 1, therefore 1 implies what is your I was integration a to 0 to twice a fx dx is equal to integration 0 to a fx dx plus I1 is what, ultimately 0 to a f of twice a minus x dx. Okay, so finally we get our destination. Okay, so this is the way you can utilize this particular property in problems, and I am going to write the next property, and that next property will be proved by using this particular property. Okay, this is very useful property. Integration 0 to twice a fx dx is equal to what, integration 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of twice a minus x dx. Okay, now what is the next property? This is very important. With this property we are going to solve few questions. Property number what, 7. The property is integration 0 to twice a fx dx is equal to, there are two results. One result is 2 into integration 0 to a fx dx. A condition is that if f of twice a minus x is equal to what, fx, and it is 0 if f of twice a minus x equal to what, minus fx. Okay, so this is the particular property. Using this property we are going to solve few questions. See, what is the property? Integration 0 to twice a fx dx is equal to what, 2 into 0 to fx dx. If this condition is satisfied, then this upper limit is split. It will be split by 2 into a, and this 2 will come out from here, and it can be what, 2 into 0 to a fx dx, and which is equal to 0 if f of twice a minus x is equal to what, minus fx. Okay, we know this property. Using this property we are going to solve this particular above property. Okay, so here this property is, we know that you start with, we know that integration 0 to twice a fx dx equal to integration 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of twice a minus x dx. This is the property we know. Okay, we already prove it. This is suppose number 1 relation. Okay, now if f of twice a minus x equal to fx, then what will happen? What will happen about this particular integral? This is 0. This left hand side is 0 to twice a fx dx, and right hand side is, this is already 0 to a fx dx. Only what happened, f of twice a minus x can be written as what, fx. So you can replace 0 to a, this can be replaced by what, fx, using the given condition, and finally this both the integral are what, same. So if you consider this is your x, then this will be x, so x plus x is equal to what, twice x. So which can be written as
0 to twice a fx dx can be written as what? Ultimately 2 into integration 0 to a fx dx. So first part of the property has proved. Okay, now we are going to prove the second part. What is the second part? Second part में condition क्या है? If f of twice a minus x equal to suppose minus fx, then what will happen? Then what happen? Your integral is what? 0 to twice a fx dx equal to integration 0 to a fx dx plus integration at 0 to a f of twice a minus x dx. This was your integral. Okay, after using the property you get this integral. Now f of twice a minus x can be replaced by what? Minus fx. अब replace करेंगे तो क्या होगा? So integration 0 to a fx dx, तो इसके जगह में माइनस fx पुट करें तो माइनस इधर आएगा, तो माइनस आएगा तो 0 to a fx dx हो जाएगी. ठीक है, दोनों सेम है, both are same, so that both can be cancelled, and finally you are getting the result what? 0. So ultimately your integral becomes what? 0 to twice a fx dx is equal to what? 0. Under what condition? Under this condition. And this is equal to 2 into 0 to fx dx. Under what condition? When f of twice a minus x equal to what? Plus fx. Okay. So finally you can conclude that integration 0 to twice a fx dx equal to what? 2 into 0 to a fx dx. Under what condition it will be? When f of twice a minus x is equal to what? Fx, and equal to 0 when f of twice a minus x is equal to what? Minus fx. Okay, so we can achieve our result, and this way we can prove this integral. Okay, this particular integral I am going to use in few problems. For example, suppose that integration 0 to pi sin x dx, or very simply you say log sin x dx. In this integral what we will do, see, this can be written as 0 to 2 into pi by 2 log sin x dx. This is your fx. Okay, fx is what? Fx is log sin x. And what is your twice a? Here a is equal to what? Pi by 2, and this is your twice a type. What is the property? Property is 0 to twice a fx dx equal to 2 into 0 to a fx dx when f of twice a minus x equal to what? Fx. If this property is satisfied. Now I am going to apply this property in this particular question to make the limit, upper limit pi by 2. So you see fx is equal to what? Log sin x implies f of twice a minus x. What is f of twice a minus x? Twice a means what? 2 into pi by 2. 2 into pi by 2 means what? Pi. So f of twice a means what? Pi minus x equal to log sin pi minus x, okay, is equal to what? We know the sin pi minus x in second quadrant, it is the angle lies in what? Second quadrant, and in second quadrant sin is what? Positive, and since pi is there, integral multiple of pi रहेगा तो क्या होगा? Sign changes नहीं होगा, और you can say 2 into pi by 2. So pi का coefficient क्या है? 2 है, even number है, sign cannot be changed, it will be remain same. So it is log sin x. Understood? So finally what we get? F of pi minus x is equal to what? Fx. And ये pi क्या है? 2 into pi by 2 minus x. That means it is of the type twice a minus x type. F of twice a minus x is equal to what? Fx. So this integral can be written as 2 into 0 to pi by 2 log sin x
dx. So in this way you can utilize the property to split the your limit, upper limit, and make is like that 0 to pi by 2. So in some problems what happen, whenever we are going to solve, we need to split the upper limit. अपर लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा प्रॉब्लम की डिमांड के साथ, प्रॉब्लम की नीड के साथ, ठीक है. इसीलिए ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है. मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हाट हैपन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस. ये मिलता है कभी कभी फंक्शन में, एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाती है, और फाइनली यू कैन राइट दिस इंटीग्रल इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म. सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 questions related to this particular concept. Okay. So first question of today's class is, we have discussed about 2 properties, and using the second property I am going to solve 2 questions which are very important for examination point of view. The question is, evaluate the integral. You have to evaluate integration 0 to pi by 2 log sin x dx. Okay. So in such type of integral what happen, it is very difficult for you to use what integration by parts method. इंटीग्रेशन पार्ट्स में क्या होती है, log will be take first function and 1 is the second function. log के अंदर another function है sin x है, इसीलिए मुश्किल हो जाएगी. If log x is there or log twice x is there, something log twice x plus 1 is there, so we have no issue, we can solve the integral. Since inside the log what happen, sin x is present, that's why this problem is complicated for us. Let us suppose that this integral is what, I. Okay, first we use the property what is the property I have used? The property is integration 0 to a fx dx equal to integration 0 to a f of a minus x dx. This property I have used. Okay, we already know many problem I have solved using this property, so that same property I have used here. So this integral becomes this pi by 2. Okay, integration 0 to what, 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x. So pi by 2 is an angle, minus x is the angle lies in what, first quadrant, and in first quadrant sin is what, positive, and with pi by 2 there is a number 1 which is an odd number multiplied. So odd number होगा तो sin changes to what, cos. So इसमें क्या आएगी, log cos and sin pi by 2 minus x क्या हो जाएगी, cos x हो जाएगी into dx. Okay, so this is your original integral. After using the property you get this integral. This is your I, so equality is there, so that also I. Okay, let us, we are going to use the twice I rule, I plus I. Twice I equal to, you can write I plus I. Okay, first integral is what, first I can be replaced by this value and second I is replaced by that value. So दोनों में क्या है, दोनों में 0 to pi by 2 log sin x है, इसे 0 to pi by 2 log cos x है. दोनों में क्या है, लिमिट सेम है, so you can take integral common, 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x into what, dx. Clear? Now you know a particular formula of logarithm, log a plus log b is equal to what, log ab. So use this property, you get log ab means log sin x into cos x into what, dx. Okay, log ab. Now this, there are 2 terms, I should convert into one single term. If you see, if there is a 2 multiplied, then what will happen, 2 sin x cos x क्या होगा, sin 2x हो जाएगी.
तो my target is that I should reduce into sin log, उसमें फिर I am come back to this particular integral again. So here you can write 0 to pi by 2 log sin 2x by 2 into dx. Can I write this? Simply we can write this, because if you expand this it will be 2 sin x cos x, 2 to cancel हो जाएगा, and finally we can get this. Okay, this particular integrand can be expressed in this particular form. Clear? Now this is twice I. Okay, twice I equal to this one written as what? 0 to pi by 2 1 integral. Here log a by b formula can be applied, log a minus log b. So first integral will be log sin 2x dx, one integral, and another integral is what? Log 2 dx. Okay, integral 0 to pi by 2 log 2 into dx. Okay, now this integral is named as what? Suppose I1, and this one is written as what? Log 2 is constant, so log 2 will come out. Constant क्या होता है? इंटीग्रल के बाहर आ जाती है, तो it becomes what? 0 to pi by 2 dx. Okay, so finally I1 minus log 2 इंटीग्रेशन dx क्या है? x, and उसका lower limit is 0, upper limit is what? Pi by 2. I hope you understand. This is very simple integral. So I1 minus log 2, and if you put upper limit it is what? Pi by 2. Okay, and lower limit क्या होगा? Pi by 2 minus 0, 0 हो जाएगी lower limit. So ultimately what happened? The result is twice I equal to what? If you say this is twice I, is make it as relation number 1. Okay, we have to simplify what? I1. What is I1? 0 to pi by 2 log sin 2x dx. Now come to I1. Now I1 is equal to what? 0 to pi by 2 sin 2x dx. I'm sorry, log sin 2x dx. Log sin 2x dx. In your original integral, what was given? It was given integration 0 to pi by 2 log sin x dx. इसमें क्या है? twice x है, तो हम twice x को x बनाना है. ठीक है, तो वहाँ में थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे. We will take twice x is equal to what? t, then 2 dx is equal to what? dt, and dx is equal to dt by 2. x का लिमिट क्या है? x का लिमिट 0 है, तो t का लिमिट 0 होगा. x is equal to what? Pi by 2. If you put x is equal to pi by 2 here, what will happen? 2 into pi by 2 means pi, so t equal to what? Pi. Understood? So finally your integral becomes 0 to what? Pi by 2 क्या हो रहा है? Pi हो रहा है. Pi log sin 2x means what? Sin t. And what is dx? dx is equal to what? dt by 2. So finally you are getting half bar layout, half into integration 0 to pi log sin t dt. Understood? Log sin t dt. And now you are going to check log sin t, what property it is satisfying. That is, I am going to check. Now this is your function in terms of c. Here ft equal to what? Log sin t. So I am using the property that is 0 to twice a. Twice a means what? Here twice a equal to I am supposing pi. तो a equal to what क्या होगा? pi by 2 होगा कि नहीं? So twice a, f of twice a minus t. Twice a means what? Pi. If you compare with your formula, twice a means what? Pi.
इक्वल टू what log sin pi माइनस टी, एंड ये क्या होगा log sin pi minus t equal to what again sin t by quadrant rule, and which equal to what ft. Understood? So finally what you get, f of twice a minus t equal to what ft, and therefore this integral becomes what, so I1 equal to half into ये क्या हो जाएगा 2 into 0 to pi by 2. ये सुनो, ये क्या है, ये क्या है, पाई क्या है, पाई इज व्हाट, पाई कैन बी रिटन एज 2 into pi by 2. ओके, 2 into what pi by 2. सो योर इंटीग्रल इज व्हाट 0 to twice a type, 0 to twice a type. ओके, सो ये 2 बाहर आएगा, लिमिट क्या होगा 0 to pi by 2 होगा, log sin t dt होगा. ये सुनो, now this 2t cancel, and we know that by the property number 1, first property, you know that anything inside the integral, it is in terms of other than x. so ये t है, dt है, सेम पैटर्न में है, तो आप क्या कर सकते हो, t को x में रिप्लेस कर सकते हो. so if you replace it, your integral becomes 0 to pi by 2 log sin x dx. okay, 0 to pi by 2 log sin x dx, and it is nothing but your what, your I. Originally you have supposed that 0 to pi by 2 log sin x dx is equal to what, I. So finally I1 is equal to what, I. Okay, so you get a relation what, twice I equal to I1 minus pi by 2 log 2. okay, your purpose is to find what, you are to find what, I. so what is I1, I1 is equal to what, I. so replace karo, it is becomes what, this is twice I equal to I minus pi by 2 log 2. okay, and finally ये I इधर लेफ्ट हैंड साइड में पिकअप करे तो क्या होगा, twice I minus I is equal to what, I, which is equal to what, pi by 2 into log 2. okay, and your I was what, integration 0 to pi by 2 log sin x dx equal to what, minus pi by 2 log 2. this is the final answer. okay, so this question is little bit lengthy one, but interesting, and how I have used the property, you follow and you go through the questions properly from the first to the last, then you understand every step of solving the problem. so in this particular problem I have used two properties. first I have used the property 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, and then I have used the property that just in the initiation of the class I have discussed a particular property, integration 0 to twice a f(x) dx is equal to what, 2 into 0 to a f(x) dx, when f of twice a minus x is equal to what, fx. so in this using these two property I have solved this problem. to get the confidence of solving such type of problems you need practice, तो आप practice करना है ज़्यादा. ठीक है, so next problem proceed करें. I'm going to solve the next problem. okay, the next problem is important and very very important. I am to say it is very important. Question is 0 to pi x dx divided by what, a square cos square x plus b square sin square x. this is the integral. okay, we are going to solve this particular integral. now see, in this integral if there is no x, अगर x नहीं रहता तो क्या करते, ये एक टाइप ऑफ द इंटीग्रल है. आप लोगों को इंडिफाइनर इंटीग्रल में मैंने कहा था ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और सपोज a square can be a or b square can be a, no problem, because a square is a constant, b square is a constant, so it can be consider another constant. okay, so no issue. so in such type of integral what is the rule, you have to divide numerator and denominator by what, cos square x, and convert the denominator in terms of what, tan, and then substitute tan x is equal to what, t,
and solve the integral. Okay, that is the technique, or that is rule of solving such particular integral. Okay, this integral and that integral almost same, only limit is there if there is no x. So अगर x नहीं रहता तो सीधा ये रूल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट हियर यू सी x is there, so our main job is to be what? Replace what? That is remove what? x. रिमूव क्या करेंगे? x को रिमूव कर लेंगे, ठीक है. नाउ वी नो ए प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन व्हाट 0 to a fx dx equal to integration 0 to a f of a minus x dx. First I am going to use this property. Why I am going to use this property? Because if you replace x by pi minus x तो क्या होगा? इसमें cos स्क्वायर pi minus x होगा, इसमें sin स्क्वायर pi minus x होगा कि नहीं? cos pi minus x is equal to what? Minus cos x whole square equal to what? Cos square x, and sin pi minus x equal to sin x, and sin ultimately उसका whole square क्या होगा? sin square x, and उसके साथ तो a square है, इसके साथ तो b square multiply है, between them it is what? Plus. Ultimately what happen after using the property? You see there is no change in the denominator. There is no change in the denominator. Since there is no change in the denominator, we can apply this particular property. ठीक है, ये प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन whenever you practice and solve more questions, then you can get an idea how to solve the particular problem. Okay, so ये जो टेक्निक है और आइडिया जो डेवलप करना है, आइडिया डेवलप करने के लिए आपको प्रॉब्लम में जाना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसे यूटिलाइज करना है पता चल जाएगी, ठीक है. सो दिस इंटीग्रल नेम इज़ व्हाट? सपोज आई, दिस इज़ योर आई. सो ये प्रॉपर्टी यूज़ करें. प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद 0 to pi so ये pi minus x into dx, and this is a square cos square pi minus x plus b square sin pi minus x. Okay, after using the property, so please mention the property here. This is very compulsory to mention, understood, in the answer script. So 0 to pi minus x into dx, and नीचे तो क्या हो रहा है आप already I am explain. So a square cos square x plus b square sin square x. Okay, you get this integral. This is your I, and after using the property I becomes this. ये भी I है, ये भी I है, तो रूल क्या यूज़ करो? ट्वाइस I का रूल यूज़ करो. ट्वाइस I इज इक्वल टू I प्लस I. तो फर्स्ट I इज दिस इंटीग्रल, सेकेंड I इज दिस इंटीग्रल आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी. तो दोनों इंटीग्रल में लिमिट क्या है? सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आप क्या कर सकते हो? लिमिट 0 to pi, नीचे क्या होगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, एंड ये दोनों जब इंटीग्रल साम करेंगे, ऐड करेंगे, i प्लस आई करेंगे, तो लिमिट 0 to pi कॉमन आएगी. डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा. एलसीएम क्या हो जाएगी? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. तो इसमें क्या रहेगा? x रहेगा, इसमें क्या रहेगा? पाई बाई एक्स, दोनों ऐड हो जाएगी. x माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू वाट? dx. सो फाइनली x कैंसिल, पाई भी बाहर आएगी, पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to pi dx बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x. ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इंटीग्रल. उसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? बाई cos स्क्वायर x. उसका न्यूमरेटर में अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा, और इसमें cos स्क्वायर x डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर कैंसिल होकर क्या होगा? a स्क्वायर होगा, एंड हियर इट विल बी व्हाट? b स्क्वायर sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x. डिवाइड कर रहा हूँ, एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड. न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाई व्हाट? cos स्क्वायर x. इफ़ यू डिवाइड बाई cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर, तो ये a स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू 10 स्क्वायर x होगा.
Okay, now in this integral if you take tan x equal to z, you are getting what, sec square x dx. ओके, आपको मिल रहा है तो आप सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन tan x को अगर z लेंगे तो एक मुश्किल होगा। tan x को अगर z लेंगे तो इसमें लिमिट में क्या हो रहा है, एक तकलीफ आ रहा है। when x equal to 0 z becomes tan 0 0 हो जाएगी, एंड when x is equal to पाई, x का वैल्यू पाई पुट करो तो z क्या होगा, tan पाई, z क्या होगा, tan पाई ऑल्सो 0, लोअर लिमिट भी 0 अपर लिमिट भी 0, तो क्या होगा, तो आंसर 0 निकल जाएगी। तो ऐसा आप कर नहीं सकते। आप इस प्रॉब्लम में tan x अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा उस लिमिट में चेंज करेंगे, ये लिमिट 0 to पाई है, उसको हम लिख सकते हैं 0 to 2 into पाई बाई 2। ओके, और ये जो पूरा फंक्शन है, दिस इज़ द फंक्शन। ओके, दिस इज़ योर एफ एक्स। ये एफ एक्स जो फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन ने क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा देख लो। ओके, हियर एफ एक्स इज व्हाट, sec square x by a square plus b square tan square x. So f of twice a minus x property satisfied. Twice a means what, pi, क्योंकि पाई को क्या लिख सकता हो, 2 into pi by 2. ओके, a is what, pi by 2. f of twice a minus x is equal to क्या होगा, sec square pi minus x by a square plus b square tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ओके, तो फाइनली क्या होगा, सेक पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स रहता है। पाई माइनस एक्स इज एन एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है, इसमें पाई माइनस एक्स, यस और नो, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपन, कॉस इज व्हाट, नेगेटिव, तो सेक इज ऑल्सो नेगेटिव, तो सेक स्क्वायर माइनस एक्स होगा, सेक स्क्वायर माइनस एक्स होगा, स्क्वायर ऊपर में तो प्लस हो जाएगी, एंड tan ऑल्सो इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो tan नेगेटिव होगा तो tan पाई माइनस एक्स इक्वल व्हाट, माइनस tan x होल स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x होगा, तो अल्टीमेटली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x हो जाएगी, होगा। तो ये फाइनली क्या होगा, इस पार्टिकुलर ये रिजल्ट जो है ये क्या बन गया, f(x) बन गया कि नहीं, तो f ऑफ ट्वाइस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल बिकम्स व्हाट, इसमें 2 आएगी, 2 इंटू क्या आएगी इस इंटीग्रल, दिस, ये इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी ट्वाइस आई इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 आएगी बाहर, 2 इंटू पाई तो है, और ये लिमिट क्या बन जाएगा, 0 to व्हाट, पाई बाई 2, because pi can be written as what, pi is what your twice a, and what is a equal to what, pi by 2, according to the property f of twice a minus x equal to fx minus a, क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to twice a fx dx is equal to what, 2 into 0 to a fx dx, so 2 into 0 to a fx dx, fx क्या है, sec square x dx बाई, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, लिख लो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ओके, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो वहाँ से दिस स्टेप टू दैट स्टेप वी गेट, दिस इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बाकी तो सब नॉर्मली आ रहा है, उसमें आगे थोड़ा सा इनोवेशन करना पड़ रहा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ द प्रॉपर्टी हियर टू मेक द लिमिट अप टू 0 to पाई बाई 2, देन यू पुट, इफ इट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट एक अलग होगा, इसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे तो लिमिट अलग होगा, तो जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को आगे क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू टेक लेट tan x इक्वल टू व्हाट, z, tan x इक्वल टू z लेने से क्या हो रहा है, sec square x dx equal to what, dz. This type of problems we have already solved in the what, in the indefinite integral
just limit is there, that's why the problem is little lengthy, otherwise it is a very easy question. Therefore x equal to 0 होने से, लिमिट x इक्वल टू 0 होने से, x इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या होगा, लिमिट x इक्वल टू 0 होने से z इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. x इक्वल टू π/2 implies what is z, your z is what, when x is equal to π/2, 10 π/2 equal to what, infinity. You know that 10 90 degree is equal to what, infinity, and therefore your integral becomes, ये इंटीग्रल क्या हो रहा है, this integral is equal to what, I equal to, ये मैं 2 कैंसिल करो, I equal to पाई इंटू इंटीग्रेशन, 0 के लिए लिमिट क्या है, 0 है, एंड π/2 के लिए लिमिट क्या चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा है. दिस इज व्हाट, इन्फिनिटी, एंड दिस इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, dz है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर z स्क्वायर. ओके, 10x इज व्हाट, z स्क्वायर. अभी क्या करें, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट b स्क्वायर से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, पाई 0 टू इन्फिनिटी. ओके, डिवाइड करने से क्या होगा, ये बी स्क्वायर का मतलब π/b स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a/b होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इन ऊपर में क्या होगा, dz होगा. इसमें b स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें b स्क्वायर कॉमन लेने से, इफ़ आई टेक b स्क्वायर कॉमन, दैट मीन्स व्हाट हैपन, b स्क्वायर कॉमन ले लिया मीन्स b स्क्वायर से डिवाइड किया. ओके, b स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो, इसमें भी डिवाइड करो. ठीक है, तो 1/b स्क्वायर बाहर आके π/b स्क्वायर होगा, इसमें क्या होगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, और इसमें b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होके ये बनेगा. ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है ये आपको समझ में आया है. ठीक है, नाउ इफ़ यू सपोज दैट दिस इज अ वेरी स्पेशल इंटीग्रल, इंटीग्रेशन dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x by a. Here a means a square, a means what, a/b, a means what, a/b. Okay, so use this rule, use this integral, you are getting what, I equal to π/b square, π/b square, and इसमें क्या होगा, 1/a means what, 1/a/b means what, b/a, tan inverse z by this a/b. Okay, and this is can be written as what, limit 0 to infinity, limit 0 to what, infinity. ये b/a कांस्टेंट है, लिमिट के अंदर लिखने का ज़रूरत नहीं, तो इसमें कैंसिल करो, फाइनली क्या आ रहा है, π/ab. अभी अपर लिमिट पुट करें इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई a/b, तो कोई भी नंबर से इन्फिनिटी को डिवाइड करो, क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी रह जाएगी. इसे इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनीथिंग इज व्हाट, अगेन इन्फिनिटी, एंड 0 पुट करें तो इसका वैल्यू 0 होगा, 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो tan इनवर्स 0. ओके, सो फाइनली π/ab इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी. tan कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, we know that 10 π/2 equal to, already we saw 10 π/2 equal to what, infinity. So tan inverse infinity, ये tan inverse हो जाएगा, tan infinity equal to what, π/2. So इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2. So finally what we get, it is pi square by twice ab. So this is your I, finally I is equal to what, this is the result. So these are the two problems I have solved. These two problems basically depend on that is two particular property, and both the problems two property I have used, and same two property I have used. Okay, so useful problem, important questions. In this problem, practice is required repeatedly. I tell you, practice and practice to make yourself perfect in the subject mathematics, and especially in integration, more practice is required. Integration is such a topic where without practice you cannot डेवलप द इंटीग्रल. आप एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, और स्टेप कैसे आ रहा है ये स्टेप फॉलो करो, जहाँ से स्टेप इनोवेशन आ रहा है ये स्टेप में क्या करो, रिमार्क करके रखो कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेप में ध्यान देंगे कि कहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हुआ, क्यों यूज़ हुआ, ये सारे चीज़ दिमाग में रख के
प्रैक्टिस करेंगे तब जाके कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो आप डील कर सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, यही मेरा उम्मीद है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्लास, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड माई क्लास प्लीज़ share my videos to all your friends so that everybody can be benefited, and also those who have yet not subscribed my channel, please subscribe my channel, and जो राइट साइड में बेल आइकन रहते हैं बेल आइकन को दबाओ, और such that whenever I upload video the notification comes to you such that you can watch the video immediately. Okay, so thank you very much, all the best, have a good day.